Now let's see the criteria for congruence of triangle. Basically, you are going to learn 5 criteria in this session. First is SSS, that is side congruence criteria. Second, SAS, side angle side. Third, ASA, angle side angle. Then angle side, and then RHS, right angle hypotenuse side. I'm going to explain you one by one. So let's start first SSS. As the name indicates, side, congruence rule. According to this rule, if 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides of other triangle, then we can say the two triangles are congruent by SSS congruence criteria. For example, you can see this figure ABC and here PQR. See, the side AB is 5 centimeter and PQ is also 5 centimeter. Then BC is 6 centimeter and QR is also 6 centimeter. Then AC is 2 centimeter and PR is 2 centimeter. So here we can say कि the triangle ABC is congruent to triangle PQR and the corresponding sides AB is equal to PQ है, BC is equal to QR and AC equal to PR. So you can write triangle ABC is congruent to triangle PQR by SSS criteria. Let's suppose triangle PQR. Let's see the next example. Suppose a triangle PQR and this is triangle XYZ. Here PQ is 2 centimeter, QR is 1 centimeter and PR is 3 centimeter. In this triangle, YZ is 2, ZX is 1 and XY is 3 centimeter. Can we say the triangles are congruent? Yes, because PQ is 2 and here it is YZ, which is also 2. So PQ is equal to YZ, QR is equal to ZX and PR is equal to XY. So here we can say triangle PQR is congruent to triangle. Now how will you write the name? You should have to write the corresponding sides and corresponding vertex. Like अभी PQ, ये पहले भी आपको एक्सप्लेन किया मैंने, जैसे लाइक ये PQ है तो PQ पहले आप PQ ले रहे हो फिर आप QR ले रहे हो क्योंकि आपने ऐसे लिया है PQR. अब PQ 2 सेंटीमीटर है, here YZ is 2 centimeter. तो P का corresponding vertex क्या होगा? Y. Then Q. Here corresponding vertex will be Z because it is PQR. Here Z, YZX. ऐसे है ये. So आप यहाँ पे लिखोगे YZ and X by SSS criteria. Understood? So for SSS criteria, the 3 sides of a one triangle should be equal to the corresponding 3 sides of the another triangle. Isn't it? Now that's it. Next criteria. Our next criteria is side angle side criteria. See this. Side angle side, that is SAS. So according to this criteria, according to side angle side criteria, two triangles are congruent if two sides, as the name indicate. अब नाम में क्या है देखिए, पहले two sides है and included angle. साइड के बीच में एक एंगल होना चाहिए. सो इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, then we can say the triangles are congruent by SAS congruence criteria. For example, suppose this is ABC and PQR. Suppose AB is equal to 4 centimeter and PQ is also 4 centimeter. Then angle A is 30 degree and angle P is also 30 degree. AC is equal to 5 centimeter and PR is also 5 centimeter. Can we say triangle ABC is congruent to QPR or PQR by the criteria SAS, side angle side? You have to keep in your mind that as the name indicates side angle side, angle should be included between the two sides. अगर हम ऐसे ले कि AB 4 है और AC 5 है, here also this PQ is 4 and PR is 5, but angle A suppose angle A आपको नहीं दिया, instead आपको angle B दे दिया है 30 और यहाँ angle Q दे दिया है. Can we say the triangles are congruent by SAS? No, because in that case the angle is not included between the two sides, right? अभी जैसे हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने ये एक ट्राइंगल लिया है, दिस इज ट्राइंगल ABC एंड दिस इज ट्राइंगल XYZ. तो सपोज अगर हम कह रहे हैं कि AB इज इक्वल्स टू XY,
then BC is equal to YZ, and I am saying कि angle A is equal to angle X. Can we apply this criteria for this triangle? Though we have two sides and one angle, है ना, इसमें two side और एक angle होना चाहिए, but the angle should be between the two sides. Is it satisfying this condition? No. Here the angle is not included between these two sides. So we can say triangle ABC is not congruent to XYZ. So just keep in your mind, the angle should be between the two sides. However, the sides may be any and the angle should be any. Like ऐसा नहीं है अभी जैसे ये दो साइड और ये एंगल है, हाँ ठीक है, अभी ये दो साइड्स है तो ये एंगल उसके बीच में होना चाहिए. फिर अगर ये एंगल इक्वल है, बी एंगल वाई के इक्वल है तो यस, इट इज कॉन्ग्रेंट बाय SAS. और अगर सपोज ये दोनों साइड से, ये वाला साइड है BC और AC दिया है और YZ एंड XZ इज गिवन, देन you should have angle C is equal to Z, then side angle side. All right, okay. Now one more thing I want to explain you, if the two triangles are congruent, always keep in your mind, if the two triangles are congruent by any of the criteria, then their corresponding parts are also equal. That is known as CPCT in short. The full form of CPCT is corresponding parts of congruent triangle. Means if the triangles is congruent, then their corresponding parts are also congruent, they are also equal. Because we need how many elements to prove any triangle congruent? Minimum 3. क्योंकि आप जो भी क्राइटेरियाज के नेम देख रहे हो, SSS 3 है, SAS साइड एंगल साइड 3 एलिमेंट, एंगल साइड एंगल 3 एलिमेंट, एंगल एंगल साइड 3 एलिमेंट, RHS ऑल्सो 3 एलिमेंट्स. सो वैसे देखा जाए तो ट्राइंगल में वी हैव 6 एलिमेंट्स, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, isn't it? But we need to prove triangle congruent any 3. So remaining 3 will be congruent if the triangles are congruent by CPCT rule. Corresponding parts of congruent triangle means अगर triangle ABC और PQ are congruent है, सपोज यहाँ हमने ये इन तीनों चीज़ों को लिया है, ये साइड ली, ये एंगल लिया और ये साइड लिया, तो बाय CPCT यू कैन राइट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, साइड BC इज इक्वल टू साइड QR. Is it clear? Okay, now let's move ahead with the third criteria, that is angle side angle criteria. Okay, now angle side angle, as the name indicate, the side should be included between the two angles, right? Angle side angle, पहला जो था इसके ऊपर का आपने side angle side देखा था, angle should be included between the two sides. Here the side should be included between the two angles, means we need two angles and one included side to prove the triangle congruent by this rule. According to this rule, two triangles are congruent if two angles and the included side. Suppose this is my triangle ABC and this is my triangle PQR. Here angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, and the included side here AB is equals to PQ. So what is the definition? What is the rule? The rule is two triangles are congruent if the two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of the other triangle, of course corresponding. Okay, so then we can say the triangles are congruent by angle side angle. Any two angle and included side, again the same rule is followed for every triangle कि कोई भी दो एंगल और एक साइड होनी चाहिए. I can even take this side, suppose अगर हम एक और ट्राइंगल ले रहे हैं PQR XYZ. Here I am saying angle Q is equal to angle Y, angle R is equal to angle Z, and side QR is equal to YZ. So yes, my triangle PQR is congruent to XYZ by angle side angle rule. And as I explain you, if the triangles are congruent, their corresponding parts are also equal by CPCT rule. So I can say now angle P is equal to X, PQ is equal to XY, side PR is equal to XZ. Is it clear? Even if you know P and X, so you can say, and PR is given कि by PR is equal to XZ, so you can write yes, the triangles are congruent by angle side angle, but the side should be included between two angles. Clear? Okay, now let's start fourth criteria, which is angle angle side. Okay, now what is angle angle side? You know that before I explain this rule angle side, you know that कि by angle sum property you learn chapter number 6 and you learn the angle sum theorem. In a triangle the sum of three angles is 180 degree, isn't it?
किसी भी ट्राइंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। इसका है एंगल साइड। अब अगर सपोज आपको दे दिया है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इट इज गिवन, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। सपोज एंगल ए इज इक्वल्स टू say 50 degree and P is also 50 degree. Suppose angle B is given to you as suppose 60 degree and Q is also 60 degree. एंगल साइड है, और सपोज आपको एनी वन साइड, टू पेयर्स एंड एनी वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो अगर आपको दे दिया है सपोज ए सी is equal to PR, तो we can say triangle ABC is congruent to PQR by angle side criteria. Here the condition is कि any two pair of angles, two triangles are congruent if any two pairs of angle and one pair of corresponding side. The side is not necessary कि वो उसके अंदर included हो, ऐसा नहीं है। अब ये भी हो सकती है, दो पेयर लिया तो ये साइड भी हम ले सकते हैं, BC और QR को भी ले सकते हैं। एक्चुअली ऐसा क्यों, इसके पीछे अगर लॉजिक आप देखोगे कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर दो एंगल्स, दो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ऑफकोर्स बाय एंगल सम प्रॉपर्टी जो थर्ड एंगल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, C इज इक्वल टू R, क्योंकि 180 ही होता है ना। तो अगर ये 60 है और ये 50 है, 110 हो गया, 180 माइनस 110 कर दोगे तो आपका C कितना हो जाएगा, 70 आ जाएगा। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये प्रूफ होता है कि थर्ड तो फिर इक्वल होना ही है, और अगर थर्ड एंगल भी इक्वल है तो ऑफकोर्स वो क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल्स। हाँ, एक साइड भी इक्वल होना जरूरी है क्योंकि उसको पूरा वो कॉन्ग्रुएंस पूरा इक्वल होना चाहिए, बाकी थर्ड एंगल तो इक्वल हो ही जाएगा ना। इसलिए दो एंगल एंड मैनी वन साइड। सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज एंगल साइड। हाँ, हियर एनी, अब साइड का कंडीशन नहीं है कि साइड अगर बीच में, अगर ये साइड इंक्लूडेड आ गई तो एंगल साइड एंगल लग जाएगा रूल, तो साइड कहीं भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये एक और एग्जाम्पल ले लें कि ये PQR है and this is XYZ and suppose it is given R is equal to Z, angle Q is equal to Y and side PR equal to XZ. Yes, we can say the triangles are congruent by angle side. And again I am repeating, if the triangles are congruent, if two triangles are congruent by any criteria, then their remaining corresponding parts are also equal by CPCT, corresponding parts of congruent triangle. Okay, now let's discuss the last criteria, RHS, right angle hypotenuse side. Now RHS, as the name indicate, it will be applicable if and only if the triangles are right angle. अगर राइट एंगल है तो ही आप इसके बारे में सोचिए। इफ द गिवन ट्राइंगल्स राइट एंगल, एनी 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री आपको दे दिया है तो ही आप इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है। अदरवाइज नो नीड टू थिंक अबाउट इट। According to it, if the two right triangles and the hypotenuse of one side क्या होना चाहिए, एक तो एक right angle होना चाहिए। According to the rule, suppose ABC and this is PQR, a right angle, एक angle आपका right angle होना चाहिए। If in two right triangles, दो right angle triangle है, the hypotenuse should be equal to hypotenuse and one right angle are equal and one side, any one side. Listen carefully. If in a two right triangles, the hypotenuse and one side, एक 90 डिग्री तो होना ही चाहिए, hypotenuse should be equal to hypotenuse होना चाहिए, and any one corresponding side, any one, it may be AB, PQ and it may be BC and QR also. कोई भी एक साइड आप ले सकते हो। सपोज आपको AB is equal to PQ given है, if they are equal to the hypotenuse and one side of other triangle, then the two triangles are congruent. What is the rule? राइट, RHS के लिए क्या हो लगता है, पहले तो वो राइट एंगल होना चाहिए, दूसरा द हाइपोटेनियस शुड बी इक्वल टू हाइपोटेनियस एंड थर्ड एनी वन करस्पॉन्डिंग साइड। एनी वन मीन्स इट कैन बी BC and QR also. So we can say the triangles are congruent by RHS criteria. Suppose अगर एक हम यहाँ एक बनाते हैं, ये है हमारा PQR and this is my XYZ. Then suppose Q is equal to Y, these are the right angle triangle. Then what is the next condition? The hypotenuse should be equal to hypotenuse. Okay, then PR is equal to XZ given है. It is also given that QR is equal to YZ. Can we say the triangles are congruent by RHS? Yes, because they are satisfying the condition. They are right angle triangle, hypotenuse equal to hypotenuse and any one corresponding side.
तो मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे यहाँ पे हमने ये वाली साइड ली थी, यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, कोई भी एक साइड, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट।